Hi everyone. What if I told you that Bhagwad Gita had already discovered 5,000 years back the secret of powerful communication? I'm sure you'll be surprised, but that's true. Four pillars mentioned in Bhagwad Gita can actually transform the way you communicate, the way you express yourself, and the way you unleash your ideas. The first pillar, according to Bhagavad Gita, is Satya. Satya is honesty. What is more important is that when you communicate, you've got to reflect this idea that you're very honest and you actually maintain that integrity of communication and bring that authenticity in the way you communicate. आजकल के contemporary environment में what I have seen as a trainer when I meet young professionals and students, they actually want to overclaim. They go overboard. They just don't realize that the listener understands the reality. So it should be, your communication has to be as honest as possible. एक सिंपल एक्सरसाइज करके देखिए. आप ये देखिए कि जब आप अपने आप को सेल करते हैं किसी भी ओकेजन पे, व्हेन यू आर सेलिंग योरसेल्फ, रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड सी हाउ ऑथेंटिक, हाउ जेन्युइन एंड हाउ फुल ऑफ इंटेग्रिटी यू साउंड. मुझे लगता है फ्लैम्बॉयंट कम्युनिकेशन से बेटर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, और ये भगवत गीता बोलती है सत्य. सेकेंड, यू आर ऑनेस्ट बट यू आर नॉट प्लीजिंग, प्रिय. आपका कम्युनिकेशन ऑनेस्टी के साथ कितना ज्यादा स्वीट साउंड करता है, कितना इनवाइटिंग, कितना अपीलिंग है, कितना जेन्युइनली केयरिंग और कंसर्निंग है. एक टिपिकल कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में बॉस दो तरह से बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं. पहला, that the entire report that you've created is a total mess. It is absolutely it's a bag of trash. या कई बार हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कम्युनिकेशन होता है जहां पे कि अगले इंसान ने शायद इतना अच्छा तरह से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जब हम बोलते हैं that you are no good, you are spoiling things, it doesn't really invite people to do better in life. कम्युनिकेशन प्रिय होना चाहिए. आप ये बोल सकते हैं it could have been done better, it's a good attempt, but I believe we expect a lot out of you. तो आपके कम्युनिकेशन में कितनी ज़्यादा स्वीटनेस और कितनी ज़्यादा पोलाइटनेस है वो भी इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी प्रिय. दैट्स व्हाट भगवद गीता सेज. एंड द बेस्ट वे टू रियली आस्क योरसेल्फ इज टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशंस in terms of real life, wherein you really find yourself in difficult situation and you feel like expressing your anger, but you actually convert that into very assertive and yet very pleasing sounding communication. You can find out situations and do a lot of practice. Third, सत्य है, प्रिय है, लेकिन किसी को फायदा नहीं देता, हितम. मतलब it should be beneficial to people. Your communication has to really bring that benefit and advantage to the listener or to the receiver, which is very important, because there are powerful communicators, but they are always part of the problem. They never look at the solution. उनकी कम्युनिकेशन में सोल्यूशन नहीं है, तो प्रॉब्लम का पार्ट होके आप क्या अचीव कर रहे हो, किसी का फायदा नहीं हो रहा है. सो इट्स बेटर दैट यू ब्रिंग सोल्यूशन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, and there are situations where you can actually find yourself in, and you ask yourself, the action is, what has been my contribution as a speaker, as a communicator. करप्शन बहुत है इंडिया में, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं कर रही है, रिलीजन के नाम पे लोग बहुत कुछ गलत कर रहे हैं. आप ये बोल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक पीपल रियलाइज एज टू व्हाट कैन बी आवर कंट्रीब्यूशन टू इट. That's very important. And fourth, अनुद्वेग कर्म. भगवत गीता बोलती है कि आपकी लैंग्वेज सत्य है, प्रिय है, हितम है, लेकिन उसके साथ ऑफेंसिव भी नहीं होनी चाहिए. अगर आपकी लैंग्वेज ऑफेंसिव है, अब्यूजिव है, एक्सप्लेटिव ओरिएंटेड है, तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस होगी. टिपिकल एग्जाम्पल, टेलीविजन शोज में आजकल जो मीडिया है, कंटेम्प्रेरी मीडिया, जहाँ पे लाइव डिबेट्स होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत ऑफेंसिव होती है, बहुत अब्यूजिव होती है, बहुत एक्सप्लेटिव ओरिएंटेड है. ऐसा लगता है कि इतनी इनसिक्योरिटी है कि दूसरे इंसान को किस तरह से ओवर पावर करना. यही टिपिकल लैंग्वेज अगर आप सब जगह कैरी करेंगे तो आप कहाँ सोल्यूशन क्रिएट करेंगे.
आपकी लैंग्वेज में एक ऐसा ओरिएंटेशन होना चाहिए जो मैसेज दे कि बात को कहने में इतनी ज़्यादा ग्रेस, इतनी ज़्यादा पोलाइटनेस, इतनी ज़्यादा dulcet ओरिएंटेशन हो that you come across as a very powerful speaker. These 4 pillars mentioned in Bhagwad Gita actually are the tenet of modern contemporary communication. Instead of following these 4, Satya, Priya, Hitam, Anudvekaram, we focus more on flamboyance, we focus more on techniques, we focus more on different tools. Trust me, if you want to convert yourself into a powerful speaker, follow these 4 tenets in your daily life. You not only will become a powerful speaker, but also a very compassionate human being. And that is what Bhagwad Gita says. I found it very powerful, so I share. If you like my videos, do share and subscribe. It will help us build a better community. Thank you.